Hello everyone, welcome to Sizzling Kitchenette. Today's recipe is a quick and instant rice recipe which takes only 10 minutes to prepare and it's a pulao recipe. So yes, चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी. Before that, if you enjoy this video, please don't forget to hit the like button, comment, share and to subscribe to my channel if you haven't. So let's get started. पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए चावल 1 कप, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके एयर ड्राई कर लिया है. आप इस पुलाव को बनाने के लिए अपने पसंद का कोई भी चावल यूज कर सकते हैं. काजू, किशमिश, पाउडर्ड शुगर, सॉल्ट, ग्रेटेड अदरक. होल स्पाइसेस में हमें चाहिए 2 तेजपत्ता, 3 हरी इलायची, हाफ टी स्पून लौंग, दालचीनी, गरम मसाला पाउडर, पानी 2 कप. अब कोई भी माइक्रो ओवन सेफ बोल में 1 टीस्पून घी डाल रहे हैं और फिर सारे खड़े मसाला और काजू किशमिश ऐड कर रहे हैं. Mix well and microwave everything for 1 to 2 minutes. एकदम खिला खिला पुलाव बनाने के लिए the trick is the measurement of the water, that is 1:2. जैसे मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिया है तो मैं इस रेसिपी में 2 कप पानी यूज करूंगी. फिर इस बोल को निकाल लेना है और अब इसमें वॉश्ड एंड ड्राइड चावल ऐड कर रहे हैं. Mix well and add more 1 teaspoon ghee and garam masala powder. फिर ग्रेटेड अदरक का जूस ऐड कर रहे हैं. Add salt as per taste. Mix well and add water. The detailed description of the recipe is there in my description box below. Please check it out. Then cover the lid and microwave on medium temperature for 7 minutes. To watch my other rice recipes, do click on the I button right above and watch those after you watch this video. 7 minutes बाद बोल को निकाल लेना है और अभी इसमें 3 टीस्पून पाउडर्ड शुगर ऐड करके मिक्स करना है. Lastly, add the slitted green chilies and microwave for more 3 minutes. And our pulao is ready to be served. Serve it hot with any form of curry of your choice. Also, don't forget to comment below if you like the recipe.